Let's read the text first. I see Tokyo. Tokyo has a population of 35 million people. So sometimes people misunderstand be verb and has. Tokyo is a population or Tokyo has a population? Right. This class has a students or this class is a students? Right. Got it. So be verb means is, am, are, was, were, and has, have is different, of course. Tokyo has a population of 35 million people. Reputation, people are a reputation or people have a reputation? Think. People have a reputation or people are a reputation? People have a reputation. So it's very important that you understand how certain nouns connect with the subject. Like you said, Sashi, people are a reputation. What does it mean? People have a reputation. उनका reputation होता है, हिंदी में बोलते हैं उसका बहुत अच्छा reputation. He has a good reputation. He is a good reputation. He has a good reputation. Okay. So you have a passion or you are a passion? Connection बनाइए दिमाग. यही important है. Okay. People have a passion. People have a reputation. Cities have a population. Tokyo has a population. Tokyo has a population of 35 million people. It is the largest city in the world. Superlative. The largest city. Not in Japan. It is not the largest city in Japan. It is the largest city in the world. Mumbai is the largest city in India, but it is not the largest city in the world. Okay. Next. It is also one of the most exciting. It is one of the most exciting cities. Tokyo is one of the most exciting. Here is an adjective, yes or no? It is one of the most exciting cities. Exciting is an adjective. ing adjective, ed adjective. मुझे बताइए, if you remember, films are boring or bored? And the audience? Bored. A teacher can be boring and the students can be bored. And if the students are boring, then the teacher is bored, right? Fine. If a match is exciting, then the audience are excited when they watch the match. Last match India played against England, T20, was not very exciting because it was not a last over finish. India won, we were happy, but it was not a very exciting match. Yes, Abhishek Sharma's innings was very, very exciting. The way he was playing. If anybody watched the last T20, I just watched the highlights. He scored 79 runs in 30 odd deliveries. 30 odd deliveries means 31, 32, 33. इसी को क्या बोलते हैं? 30 odd deliveries. अगर आप प्रिसाइज नहीं होना चाहते तो क्या वर्ड यूज कर देते हैं? 30 odd deliveries. 30 odd बोलने का क्या मतलब है दोस्तों? 31, 32, 33 ऐसे करके 30 में कुछ जोड़ लो, 30 odd deliveries. ठीक है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूं कि 32 था, 33 था, 34 था, तो मैंने कहा 30 odd deliveries.
कुछ कुछ हिंदी नहीं जानना है, आपको पर्पस समझना है कि कभी कभी एग्जैक्ट नंबर नहीं कहते हैं, उसमें एक दो बढ़ा हुआ रहेगा तो क्या बोल देंगे, ऑड, 30 ऑड, 40 ऑड, 20 ऑड। देयर वर 20 ऑड पीपल, मतलब 20-22 लोग थे, हिंदी में जैसे बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं, 20-22 बोलते हैं ऐसे, हाँ वैसे ही हुआ। There were about 20 odd people. There were 20 odd people. Okay. So yeah, he scored 79 runs in 30 odd deliveries. तो odd मतलब समझ में आया यहाँ पे, यहाँ पर अब इससे ये नहीं डिसाइड कर सकते कि odd हर जगह आपको समझ में आने लगेगा। odd के और कई मीनिंग्स होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे किसी एक वर्ड की आप हिंदी सीखते हो तो आपको लगता है वो हिंदी अप्लाई हो जाएगा हर जगह, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैथ्स में पढ़ा होगा ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स, उस ऑड का यहां से कोई लेना देना नहीं है। जब मैंने कहा 30 ऑड डिलीवरीज, तो ये 32 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है। हाँ, ऑड से कोई मतलब नहीं है, ऑड एंड इवन उसका कोई कनेक्शन नहीं है। गॉट इट? 30, a few more deliveries, 1 or 2, 3 more deliveries, ऐसे करके बोलते हैं 30 और deliveries। ओके, चलिए कोई नहीं, मुंह से निकल गया कि अरे वो नासिरन बनाया 30-32 गेंद में, ठीक है, तो मैंने कहा ही स्कोर्ड 79 रन्स इन 30 और डिलीवरीज। ओके, ये बस इतना हुआ कि हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बताए, लेकिन आपको भी पता है कितने बॉल्स लिए होंगे उसने, कितने बॉल्स लिए होंगे, 22, 32, 33, 34 डिलीवरीज लिया होगा उसने, स्कोर करा है 30 और डिलीवरीज। ओके, Tokyo has a population of 35 million people. Tokyo has a population of 35 million people. अब अगर वो जो ऑड वाला मीनिंग मैंने बताया, अगर एक दो सेंटेंस आप भी लिख देंगे ग्रुप में, तो मुझे ये लगेगा कि आप एक्नॉलेज कर लिए उस लेसन को, टाइम वेस्ट नहीं हुआ वो। एंड इफ यू इग्नोर इट, देन मेरे टाइम वेस्ट किया, क्योंकि आपको याद रहेगा नहीं, ये तो पक्का है। अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करो तो आपको याद रह जाए। आप एक बार किसी आदमी को सुनो, उसका नाम क्या है, अगले 5 साल, 2 साल, 2 महीने नाम मिले, उसका नाम याद रह जाएगा, बहुत रेयर केस में, इफ दैट पर्सन इज वेरी स्पेशल इन सम वेज, तो बात अलग है। 30 odd deliveries. Tokyo has a population of 35 million people. It is the largest city in the world. It is also one of the most exciting cities. When India got out in Australia for 40 runs or 40 odd runs, the whole team got out for 40 odd runs. Remember, 47 or 46, something like that. In the last series, when India went to Australia. Okay. And here, I think, maybe at home against New Zealand. Sorry, my bad. It was against New Zealand. Okay, my bad. मतलब आपसे गलती हो कोई बात तो इनफॉर्मली क्या बोल देते हैं आप? My bad. मतलब नहीं, गलती हो गया, कैसे बोलते हैं? हाँ, मेरा बुरा नहीं बोलना है, इसका हिंदी ये नहीं हुआ, गलती हो गया, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं था, इट वाज नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट वाज न्यूजीलैंड। ओके, against New Zealand we got out for 40 odd runs, the whole team got out for 40 odd runs. Okay, बताइए, it was humiliating for India, or it was humiliated for India? Humiliating. It was humiliating. And how did we feel? Humiliated. We felt humiliated, and that performance was humiliating. Connection समझ में आता है? ING and ED का बहुत important है. Why I'm asking you so many times? Because I'm teaching another class after yours. वहां बड़ी स्ट्रगल हो गई लड़कों, बहुत परेशान हो गए वो ING और ED में, बार बार गलतियां कर रहे थे। तो I was a little nervous. Maybe आप लोग भी confused हो. No, you guys are not confused. You understand? That will be called a humiliating performance, right? And we felt humiliated. Okay. किसी से हमें कौन से सवाल नहीं पूछने चाहिए? एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस या एम्बैरेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए? एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि वो फील करेगा एम्बैरेस्ड, शर्मिंदा फील करेगा। आप शर्मिंदा करने वाले सवाल पूछेंगे तो, राइट? व्हाई आर यू आस्किंग सच एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस? ओके, मैं एग्जांपल नहीं देना चाहूंगा एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस के।
ओके, आप खुद समझ लेना किसको किस बात से एम्बैरेसमेंट फील होता है, राइट? ओके, so Tokyo has a population of 35 million people. It is the largest city in the world. It is also one of the most exciting cities. It is one of the most exciting cities. Everything moves fast here. Things change quickly. Everything moves fast. It's a fast city. It can mean multiple things. It can mean it is a fast city. Life is fast, and it can also mean things change quickly. Everything moves fast here. Okay. It has one of the biggest and busiest railway systems in the world. It has one of the biggest and busiest railway systems in the world. One of the biggest. सारे biggest ले लीजिए, उसमें से एक है ये, right? Most popular actors in India. Most popular? Salman, Shah Rukh, Amitabh, Akshay, Hrithik, right? These are most popular actors in India. अब इसमें से किसी एक के बारे में बोलेंगे तो बोल सकते हैं he is one of the most popular actors in India. Controversial होगा किसी को the most popular बोलना, right? I think that maybe the tag will go to Shah Rukh Khan, the most popular actor in India. Outside, on people know, Shah Rukh Khan more. He's very popular in France, in Middle East, in many countries. But if you talk about Turkey, Amir Khan is more popular. Amir Khan is more popular in Turkey. He visited Turkey some years ago, 2-3 years ago, and China. Yes, he's also popular in China. If you talk about Russia, again, now Amir Khan is popular there as well, but they, especially people of my age, they all know Raj Kapoor a lot because Mera Naam Joker was a great hit there in the whole of Russia. Anyways, I'm just trying to teach you the most and one of the most. The plus superlative, the tallest, one of the tallest. The best, one of the best. कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट बोल के निकल जाइए, राइट? आपने मुझे कहा सर यू आर द बेस्ट टीचर, ठीक है? आपने कहा सर यू आर वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स प्लूरल देयर, यू आर द बेस्ट टीचर, राइट? और यू आर वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, सेकेंड वाला सेफ गेम है, बिकॉज और कोई टीचर्स बुरा नहीं फील करेंगे, उनको लगेगा कि हाँ वो भी हो सकते हैं इसमें। आपने कहा यू आर द बेस्ट, तो बाकी को लगेगा ओ इसको ऊपर रख दिया, मतलब अब तो जगह ही नहीं बचा कहीं और। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, a lot of people, smart people use one of the best, one of the most, and whatever. Okay. It has one of the biggest and busiest railway systems in the world. Today I learned that India has a railway system which covers the railway track, covers the length of the, railway tracks in India is nearly 70,000 kilometers. 70,000, nearly. Okay. It has, matlab, Tokyo has. It has means Tokyo has one of the biggest and busiest railway systems in the world. Every day, 11 million commuters means people who travel from one point to another point repeatedly. Okay, commuters. Let's look up the word in the dictionary definition. Well, I don't use one Hindi word usually. Okay. Someone who regularly travels between work and home. Okay, work and commuters. Okay, the train was packed with commuters. Commuters are people who travel from work to home, home to work. They are called commuters. Okay, dictionary definition is straightforward.
commuters. Intercity trains are basically for commuters. Intercity train is basically for, now we have an intercity, Biharshif to Rajgir to Patna, Danapur. Lots of people from these areas work in Patna, so they go every day, right, in the morning. The timing of these trains is very suitable for the commuters. अच्छा चलो, commuters मतलब समझ आ गया. Commuters means people who travel from work to home, right? Of course. 11 million commuters use it to get to and from work. They use it. Use what? The railway system. The railway system. To get to and from work. So in Tokyo, the most popular way to travel to work is by train. Now, by train is the best way to travel to work. Yeah. Next. People earn the highest salaries and they spend the most money. People spend the highest salaries and they spend the most money. Any problems? मुझे हर हाल में सेपरेट करना होगा क्लासेस के पर्पस को. मैंने क्या गौर करा कि वो दोनों पर्पस को ये करवा देना, मर्ज करवा देने से क्लास डिस्टर्ब हुआ है. इन दिस क्लास हम लोग ग्रामर पे उतना फोकस नहीं करेंगे जितना कोई कंपटीशन बैच में किया जाता है. कई बार मैंने कोशिश की कि कवर कर लेते हैं, ठीक है, ये मेरी गलती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो लड़के कंपटीशन के लिए नहीं, बोलने के लिए बैठे, वो इतना ज्यादा फोकस करना पड़ जाता है दूसरे पार्ट्स पे कि बोलना भूल करके वो करेक्शन के में उलझ जाते हैं. ठीक है, इसलिए बेहतर ये है कि हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने पे ध्यान देना है इस क्लास. जिन लोगों को खांटी करेक्शन पे ध्यान देना होगा कि कैसे ये सेंटेंस सही, वो सेंटेंस गलत करना है, तो दे शुड बी इन अ स्पेशल क्लास स्पेशली डिजाइन फॉर correction, accuracy, and all. Here, the main purpose should be sentences which can be understood and which do not violate basic grammar rules. Which do not violate basic grammar rules. That's it. So that people can respect your English. Otherwise, you know what happens when you make a lot of basic mistakes, fundamental mistakes. People think you are not very smart because you're making so many basic fundamental mistakes of English grammar. So we will definitely take care of those. For example, I told you we must use S when the subject is he, she, it. So that is something nobody should ignore. Whether you are learning to just speak English or you are learning for competition or whatever. It is a common rule. Everybody has to follow. So yeah, because 11 million commuters use it, 1.1 crore people use it every day, right? So we can say that perhaps, you know, traveling by train is the most favorite way of these people to go to work. 1.1, 11 million, 1.1 crore people use the train. It means the train is the most popular way, right? To get to work, to travel to work. Get to work means? Yeah, okay. So 11 million commuters use it to get to and from work. People earn the highest salaries. People earn the highest salaries. And they spend the most money. They spend the most money. They don't keep all their salary in the bank account as savings. They earn the highest salaries, true, but they also spend the most money. हम आपके दोस्तों में सबसे ज्यादा खर्चा कौन करता है? Who, बोलिए आगे, कंटिन्यू करिए. Who spends the most money in your friend circle, in your friend group? Okay, who spends the most money? Give me a name. You or your friend X, Y, Z, who?
You spend the most money in your friend circle. Okay, I want to join your friend circle. Okay. Tell me, please, who spent the most money? Who spends the most money in your friend circle? You spend the most money. Ayush, your friend Ayush spends the most money. He comes from a rich family. He doesn't. He earns his own money. That's why. Two people usually spend, either they come from a rich family, then they spend a lot of money, or they have their own salary, they earn their own money, giving tuitions or working in a shop or something. How does Ayush earn his money? He's already got a job, in a sense. A freelancer means he works for himself, right? Okay. So basically, he develops websites. You should not say he's a freelancer. Freelancer, when I ask, who does he work for? Okay. When I ask, what does he do? Don't say he's a freelancer. A teacher, I'm a freelancer too. So he is a website developer. Again, when you only say the word developer, how would I know whether he develops this thing or that thing? You should always listen to yourself. I know why we make such silly mistakes. People who grow up in places like ours, Bihar type places, we are not asked to think about what we say. Let's see. The word governor. Okay. We have the word governor here. Okay. Every state has a governor. In America, there is a governor too. But they are not the same thing. Slightly different. Again, you should understand. Then you have the governor of the bank as well. RBI governor. So let's understand, a person, the word governor refers to somebody who governs. But of course, technically it can vary depending on the kind of constitution they have. What position is called the governor's position? In the state of Bihar, the governor, who is our governor? Anybody? Why don't you know? Because this post is not very, important. It's not a very important post. In day-to-day life or the policy making, the governor doesn't have a very active role to play. It is the CM and his cabinet who decides most of the things, not the governor. But if you live in the US, governor is the highest, the most important person in a state. Like our chief minister, it is Arif Muhammad Khan right now. Who is our governor? Arif Muhammad Khan. Okay. Yeah. So I'm just trying to say that when you guys say a word, okay, try and understand its literal meaning. Think about it. Don't take it for granted. For example, your friend circle, they all say he's a developer, so you use the word developer. You didn't think about it. What does it develop? A developer develops, but what? There are so many other things to develop. Websites are not the only thing that we develop. Okay. Yeah. Software developer, website developer. Okay. Website designer. I'm not sure which exactly is the word for their job. But anyways, putting a word there, like a website developer would make it more clear to me what he actually develops. Right. Every day, 11 million commuters use it to get to and from work. People earn the highest salaries and they spend the most money. Which friend of yours, which person in your friend circle spends the least money? The least money. Aman Kumar Gupta. Okay. Your second friend, what does that mean? Let's okay. Second Aman, not the Aman in this class. That's what you mean to say. Got it. He spends the least money. He is very mean. But you spend the most money.
Okay. I got to meet your friends to confirm what you're saying is right or not. Who? Uh, Inzamam, Lalu, Lalu. Now you are in his circle. He is claiming that he spends the most money. He's saying, claim matlab say, hai na? He's claiming that he spends the most money. Do you agree with his claim? You need to keep an account, okay? You need to keep accounts of all the money that you spend. On this date, I bought this for this XYZ friend, or for all my friends, I bought tea. I spent 60 rupees. Today itself. I did it today. Okay. ये इंडियन इंग्लिश था, टुडे इटसेल्फ। ये बोलने की आदत है मेरी, लेकिन स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं। इसलिए मैंने कहा है कि इस क्लास में मैं फ्रीडम लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो चलेगा। जहां हम लोगों को ग्रामर पकड़ना है, उसके लिए हमें ग्रामर क्लास करना होगा। ठीक है, और वहां पर बैठ करके हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से, पर्सपेक्टिव से सीखेंगे कि एग्जाम में क्या चीजें सही होंगी, क्या गलत होंगी। बाकी बोलने के लिए मैंने अगर कहा टुडे इटसेल्फ, अब कहीं भी बोल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। ठीक है, टुडे इटसेल्फ आई स्पेंड 60 रुपीज। और भी तरीका है, आई स्पेंड 60 रुपीज ओनली टुडे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। People earn the highest salaries and they spend the most money. मुझे बताओ, what is the adjective in the first sentence, this sentence? People earn the highest salaries. People earn the highest salaries. What is the adjective here in this sentence? Highest is superlative form. Give me the comparative form. Higher. Give me the positive form. High. High, higher, the highest. Let's move on to the next. And they spend the most money. What's the adjective here? The most. The most is the adjective. It is the superlative form. Give me the other two forms. More तो हो गया comparative. चलो दे दो मुझे positive. हंस गया ना? मुझे पता था, सोचा भी नहीं तुमने कि अरे यहां जब हाईएस्ट आया तो ये तो हाई से आया। ये जो स्पेंड, नहीं, मनी तो नाउन है ना। दे स्पेंड द मोस्ट मनी, ये मोस्ट किससे बना है? जैसे हाईएस्ट तो समझ में आया, हाई से आया, हाई, हायर। ये यहाँ तुम फेल किए अपने सोचने में, इंग्लिश में नहीं फेल किए, तुम्हारा इन क्यूरियोसिटी तुम्हें फेल कर गया। तुम सोच नहीं पाए लॉजिकली। पूछना था तुमसे, तुम्हें बताना नहीं था। ये सवाल लेके आना चाहिए था, सर हाईएस्ट तो आया हाई से, मोस्ट कहां से आया सर? द मोस्ट मनी में मोस्ट किससे आया है? तुम लोग मोस्ट को ना एक अपने आप में वर्ड मानते हो ना। अभी समझ में आया कि मोस्ट अपने आप में एक वर्ड नहीं है, पहले वो कहीं से तो बना है। जैसे हाईएस्ट अपने आप में है क्या? हाईएस्ट कहां से आया है? अब मुझे बताओ, हाई से हाईएस्ट आया और बीच में हायर आया, मोस्ट के बीच में क्या है? मोर, कंपैरेटिव। लेकिन पहला वाला क्या है जिससे जिससे वो दोनों बना है? मैं बताऊं, मच। समझ में आया? मच, मोर, द मोस्ट। खुला दिमाग। मच, मोर, द मोस्ट। मैंने एक और बोला था, हु स्पेंड्स द लीस्ट मनी, राइट? हु स्पेंड्स द लीस्ट मनी, सबसे कम कौन खर्च करता है? तो यहां पर एडजेक्टिव क्या है? द लीस्ट। अब बताओ द लीस्ट कहां से आता है? लो से लोअर और लोएस्ट होता है। लो से लोअर और लोएस्ट, द लोएस्ट। लीस्ट कहां से बना बताओ? अच्छा पहले कंपैरेटिव दे दो। लेस, लेस। कंपैरेटिव क्या है? सुपरलेटिव द लीस्ट, कंपैरेटिव लेस। लेकिन पॉजिटिव किससे बना है ये दोनों, लेस और लीस्ट? लिटिल से। लिटिल, लेस, द लीस्ट। मुझे पता है ये इरेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं, इसीलिए आपको परेशानी हुई। जैसे गुड,
कंपैरेटिव, बेटर, सुपरलेटिव, द बेस्ट, बैड, वर्स, द वर्स्ट। वर्ड ही बदल जाता है। जब वो वर्ड दिख रहा होता है, टॉल, टॉलर, द टॉलेस्ट, कोई परेशानी नहीं, इट्स सो इजी बिकॉज द वर्ड टॉल इज देयर इन ऑल द थ्री फॉर्म्स, टॉल, टॉलर, द टॉलेस्ट। लेकिन गुड से बेटर, फिर बेस्ट, वैसे ही बैड, वर्स, द वर्स्ट। अब बताओ, मच, मोर, द मोस्ट। मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसा है, आई हैव मोर मनी देन यू। मेरे पास ज्यादा दोस्त हैं तुमसे, आई हैव मोर फ्रेंड्स देन यू। ये अपने आप में एडजेक्टिव है, मोर एडजेक्टिव है, तभी तो फ्रेंड्स के पहले आया। आपने सुना होगा कि मोर लगाते हैं एडजेक्टिव में कंपैरेटिव करने के लिए, जब एडजेक्टिव लंबा हो, टू सिलेबल या मोर। जैसे कि आपको बोलना है वो मुझसे ज्यादा सुंदर है, शी इज मोर ब्यूटीफुल, खाली ज्यादा सुंदर, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन मी। ठीक है, ये मोर आया है सिर्फ इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए। किसको? ब्यूटीफुल को कंपैरेटिव बनाने के लिए ये मोर आया, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन मी। लेकिन जब मैंने कहा कि मेरे पास ज्यादा पैसा है तुमसे, आई हैव मोर मनी देन यू, ये मोर कंपैरेटिव बनाने के लिए नहीं आया, कंपैरेटिव खुद है। किसका? मच का। तो मोर अब दो तरीके से आप जानोगे, एक मोर आता है एडजेक्टिव के साथ उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए, और एक मोर खुद में अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है जो नाउन के पहले आता है। मेरे ज्यादा दोस्त हैं तुमसे, आई हैव मोर फ्रेंड्स। अरे मेरे बहुत ज्यादा दुश्मन है तुमसे, तुम्हारे कितने दुश्मन है? दो चार, मेरे बहुत ज्यादा दुश्मन है। आई हैव मच मोर एनिमीज। देखना, मच मैंने लगा एम्फेसाइज करने के लिए सर, मोर एनिमीज। मोर खाली दो चार मोर नहीं, बहुत ज्यादा। आई हैव मच मोर एनिमीज देन यू। दिमाग में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, बदमाशी कर रहे हो तुम ध्यान नहीं दे रहे। यस, मोबाइल चला रहे हो तुम। चलो आगे आओ। ही इज अ क्लेवर बॉय, ओके, ही नीड्स टू बी फोकस्ड। यस, समझ जाता है फटाक से चीजों को। ओके, एज आई वाज सेइंग, ये मोर जो है ना, अपने आप में एक एडजेक्टिव है। ये किसी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव बनाने के लिए नहीं आ रहा, ये खुद ही कंपैरेटिव फॉर्म है। किसका? मच का। ठीक है, और ऐसे ही लिटिल, मेरे पास भी लिटिल मनी है, तुम्हारे पास भी लिटिल मनी है, लेकिन किसके पास ज्यादा लिटिल मनी है? तो लेस, आई हैव लेस मनी देन यू। दोनों के पास लिटिल लिटिल है, लेकिन मेरे पास लेस है, यानी ज्यादा लिटिल है, यानी समझ गया ना बोलने का मतलब? परेशान कर रहा हूं या क्लियर कर रहा हूं? नहीं, कभी कभी मेरे यही शब्द कुछ लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, पता नहीं क्यों। आपको क्लैरिटी आ रही है? मच से मोर और लिटिल से लेस, सुपरलेटिव में ले जाओ, मच, मोर, द मोस्ट, लिटिल, लेस, द लीस्ट। तुम्हारी लाइफ में टेंशन है ही कहां? सबसे कम टेंशन है तुमको, यू हैव द लीस्ट टेंशंस, you have the least tensions in all our friend circle, you have the least tensions, I have the most tensions। टेंशन नाउन है तो बताना है अटेंशन, द मोस्ट टेंशंस। ये हम सबसे ज्यादा पानी पीते हैं अपने पूरे परिवार में। आई ड्रिंक द मोस्ट वाटर। ये कभी बोला नहीं आज तक तुमने मुंह से अपने, द मोस्ट वाटर नहीं बोला होगा। मैं पक्का बोल सकता हूँ ये फ्रेज कभी मुंह से नहीं निकला तुम्हारे, द मोस्ट वाटर। आई ड्रिंक द मोस्ट वाटर। ओके, गॉट इट। मेरी भाभी सबसे कम पानी पीती है, माई भाभी ड्रिंक्स द लीस्ट वाटर इन माई फैमिली। दायरा हमेशा क्लियर होना चाहिए, ठीक है? अगर मैंने नहीं बोला तो ये अंडरस्टूड होगा तो ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई फैमिली। इन माई फैमिली आई ड्रिंक द मोस्ट वाटर एंड माई भाभी ड्रिंक्स द लीस्ट। समझ में आ गया किस किस ग्रुप में दायरा क्या है, राइट?
द मोस्ट, द लीस्ट, मोर, लेस, बना किससे? मच, लिटिल। You have 200 rupees, I have 250 rupees. I have more money. And you have 500 rupees. You have the most money. Okay. Nobody has as much money as you. Nobody has. ये भी समझ में आ रहा है? Nobody has as much money as Elon Musk. Nobody has as much money as Elon Musk. Nobody has as much money as Elon Musk. Elon Musk is the richest person. He has the most money in the world. The richest person के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं, he has the most money, right? ये सेंटेंस आके चले गए थे, इतने छोटे छोटे सेंटेंस। पीपल अर्न द हाईएस्ट सैलरी, दे स्पेंड द मोस्ट मनी। लेकिन आप लोग उस मोस्ट पे रुके नहीं, आपने पूछा नहीं किस। हम लोग तो मोस्ट लगाते हैं एडजेक्टिव के पहले, सुपरलेटिव बना के। यहाँ तो कोई एडजेक्टिव भी नहीं है, कैसे यूज कर रहे हैं इसको? कहाँ से आए? आपने इसको समझ लिया, मीनिंग निकाल ली, सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, बस बात खत्म। हिंदी ने आपको सोचने से रोक दिया, क्योंकि आपको हिंदी समझ में आ गई, इसलिए आप परेशान। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी। जहां आपको हिंदी समझ में आ जाती है, उसके बाद आप रिलैक्स हो जाते हो। और जहां हिंदी ना समझ में आए, वहां परेशान रहते हो, भले ही सेंटेंस कितना आसान हो। तो आपको ये आदत डलवाई किसने हिंदी के साथ रिलैक्स होने की? कि हिंदी समझ में आ जाए तो रिलैक्स हो जाओ। एक्चुअली बचपन में टारगेट होता था कि सब सेंटेंस का हिंदी कर ले, बस और क्या चाहिए। तो है तो बस और क्या चाहिए, है ना? हिंदी हो गया तो बस और क्या चाहिए, वी आर फाइन एब्सोल्युटली। लेकिन नहीं, दे स्पेंड द मोस्ट मनी। दिस मोस्ट कम्स फ्रॉम द वर्ड, द एडजेक्टिव मच। मच इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। यूनिट 8 में पढ़े, वी डोंट हैव मच मिल्क। वी डोंट हैव, पढ़े थे। और टमाटोज के लिए बोलेंगे वी डोंट हैव मेनी टमाटोज। दोनों का काम एक ही है, लेकिन एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ और एक ज्यादा बटर तो है नहीं। वी डोंट हैव मच बटर। ज्यादा अंडा तो है नहीं। वी डोंट हैव मच एंड मेनी आर यूज्ड इन नेगेटिव एंड क्वेश्चंस। कितना अंडा है? डू वी हैव? कितना बटर है? हाउ मच बटर डू वी हैव? Much and many both convey the same idea. Okay, quantity and number. One is used with countable, the other is used with, याद रखना दोनों का कंपैरेटिव एक ही है। क्या? मोर। मेनी का भी कंपैरेटिव वही है। तुम्हारे पास 2 अंडे, मेरे पास 4 अंडे, बताओ। आई हैव मोर एग्स। मोर कहां से आया? मेनी से आया ना। मेनी का कंपैरेटिव, मच का कंपैरेटिव मोर। मच और मेनी दोनों का कंपैरेटिव, और दोनों का सुपरलेटिव द मोस्ट। तुम्हारे पास 2 अंडे, मेरे पास 4 अंडे, तुम्हारे पास 6 अंडे, तो यू हैव द मोस्ट एग्स। तो खाली मच का नहीं था वो, मेनी का भी था। मैंने रोक रोक के इंस्टॉलमेंट में दिया है इंफॉर्मेशन, डाइजेस्ट हो गया है। मच एंड मेनी बोथ हैव द सेम कंपैरेटिव। व्हाट इज द कंपैरेटिव? मोर। एंड दे बोथ हैव द सेम सुपरलेटिव टू, द मोस्ट। अपने घर में हम सबसे ज्यादा रोटी खाते हैं। इन माई फैमिली आई ईट द मोस्ट रोटीज। मैंने पहले ही बोल दिया था, इन माई फैमिली आई ईट द मोस्ट रोटीज। इन माई फैमिली आई ईट द मोस्ट रोटीज। ये okay, fine. I think you guys understood. Will you practice? और नहीं तो फिर वही वाली बात होगी।
आई वेस्टेड माई टाइम। अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं किया तो तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा, और निकल गया तो समझ लो कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया तुम्हारे साथ। People earn the highest salaries, they spend the most money, they wear the latest fashions. Fashions noun, right? Adjective, the latest कहां से आया? Later, latest कहां से आया? हाँ बताता हूं, लेट, लेटर, लेटेस्ट, जरा समझाता हूं। LATE लेट, लेटर LATER, और सुपरलेटिव द लेटेस्ट। सीखो कुछ ऐसी चीजें जो थी सामने, बस तुम एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे। लेट भी तुम जानते हो, ओके। हालांकि एक और भी बनता है लेट से, लेट, लेटर, लास्ट, लेट, लेटर, द लास्ट, ओके, लेट, लेटर, द लास्ट। अब इसमें ज्यादा घुसेंगे ग्रामर क्लास में, ठीक है, अभी छोड़ देते हैं, बस इतना ही खाली। द लेटेस्ट फैशन, कोई भी एडजेक्टिव सुपरलेटिव दिख रहा है तो एक थोड़ा सोचना चाहिए कहां से आया भाई, सोचना बनता है। द लेटेस्ट, कंपैरेटिव क्या होगा? लेटर, LATER, और वो हटा दो, आर हटा दो, बच गया क्या? लेट, दैट इज V1, सॉरी V1 आई एम सेइंग, द पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री लेटर, सुपरलेटिव लेटेस्ट, द लेटेस्ट फैशन, द लेटेस्ट, सबसे नया नया, सबसे हाल फिलहाल में आया हुआ, राइट? द लेटेस्ट। एंड हैव द मोस्ट अप टू डेट फोन्स। यहां पर देखिए, फोन्स नाउन, अप टू डेट एडजेक्टिव, और उसको सुपरलेटिव बनाने के लिए द मोस्ट आया, द मोस्ट अप टू डेट फोन्स, द मोस्ट अप टू डेट फोन्स। It is the world's most expensive city. The world's most expensive city. Expensive adjective, superlative बनाने के लिए most connected. The world's most expensive city. Old and new. Tokyo was originally a small fishing village called Edo. Tokyo was originally a small fishing village called Edo. Originally it was a small fishing village. Originally. It was not always Tokyo. Originally, शुरू में जो शुरुआत इसकी हुई थी, तो शुरुआत में क्या था ये? स्मॉल, ओके। Elon Musk was originally not a Trump fan. He wasn't a Trump fan originally. मतलब शुरू में, ठीक है, ओके। टोक्यो वॉज, जस्ट एक सेंटेंस बना दिया मैंने ऐसे, कोई सच्चाई नहीं इसमें, आई डोंट नो अबाउट हिम, ओके। टोक्यो वॉज ओरिजिनली a small fishing village. Adnan Sami was originally from Pakistan. Adnan Sami is originally from, he is, now he's Indian, you know, he has taken Indian citizenship, okay, but he is originally from Pakistan. Pakistan is originally a part of India, originally, okay. Origin मतलब होता है किसी चीज का शुरुआत, और राइट, वहीं से बना है ओरिजिनली एडवर्ब, ly हटा लो, ओरिजिनल एडजेक्टिव, ओके, ओरिजिनली। Tokyo was originally a small fishing village called Edo. The name changed in 1868. The name changed in 1868. The name changed in 1868 when the emperor moved there. When the emperor moved there. The name changed in 1868. The name changed. नाम बदल गया, right? The name? The name changed in 1868. नाम बदल गया. The name changed in 1868 when the emperor moved there. The architecture is very modern. The architecture means the style of the building. The architecture means Mughal architecture. All right. And means the style of the building during the Mughal times. Okay. The Mughal architecture. Okay. Persian architecture. The Persian architecture. Okay. The architecture is very modern. Means the designs of the buildings, when you are in Tokyo,
The buildings look very modern. The architecture is very modern. There are not many old buildings. There are not many old buildings. There are not many old buildings. You will not see many old buildings because of the 1923 earthquake. Because of the 1923 earthquake. The 1923 earthquake is the reason why there aren't many old buildings. You can understand earthquakes destroy buildings. So the 1923 earthquake was a big earthquake or a small earthquake? It was a very big earthquake. The worst earthquake, हमने इसको bad से कर लिया है ना? The worst earthquake of modern history or in modern history, it was 1923. Ever since we have started recording earthquakes, the intensity on Richter scales, 6.7, 8.5, 9 point something, it was the most, destructive earthquake in modern world, in modern history, 1923 earthquake. Because of that earthquake, you don't see many old buildings. And the Second World War is the other reason. In the Second World War, America dropped a lot of bombs on Japan. If you go to Gaza, you'd see only, rubble, only rubble, ruins. If you, I don't know if we can see it on Google Earth or not, but every video that shows, of Gaza, oh my goodness, they are all talking about where are they going to dump all that garbage. It is going to be, the city is going to become higher because of all the, the rubble. Okay. The ruins. Google Earth. Google Earth. I've been watching videos on YouTube ever since their truce has been made. Truce means, you understand, when there's ceasefire, you understand? Ceasefire. Yeah. Okay, ever since the ceasefire, they are showing, yes. Okay, I want to find out Gaza. I don't know if they will show the video on. I don't know how old this photo is. Are they showing it here? Yeah, it was taken on in 2023, October 2023, guys. Okay. Huh? ये न्यूज देखकर ना तुम लोग को बेवकूफ बनाता है यार। अभी तक मैं क्या सोच रहा था ना, पूरा गाजा को वो लोग क्या कर दिया है, तहस नहस। ऐसा नहीं है। I can still see a lot of houses. I am looking at, वो एक जगह का दिखा देते हैं तुम्हें, all right, and you start to believe कि सारा ऐसे ही है. Okay, yeah, we can see some parts where they have bombed a lot. Suddenly I felt October 2023 October, not 2024. Oh, it is before. Yeah, I've seen this. I've seen this. Rubble. Oh my goodness. It is unbelievable. Perhaps this was the situation of Japan in the Second World War, because America dropped so many bombs on Japan. Don't forget the atom bombs were dropped, right? 2 atom bombs were dropped. So you don't see many old buildings in Japan, in Tokyo.
Yeah, this is 2023, not a an updated photo, right? That's why I cannot see any destruction here. I was confused. Oh my goodness. Wow. What a tragedy war is. Let's continue. The architecture is very modern. There are not many old buildings because of the 1923 earthquake and the Second World War. But traditional Japan is always near. But traditional Japan is always near. It means if even when you are in Tokyo, you can see traditional Japan. Traditional Japan means old Japan, with many Shinto shrines and public baths around the city. So, what are the things that represent old Japan? When you read this text, this paragraph, the architecture is very modern. There are not many old buildings because of the 1923 earthquake and the Second World War. But traditional Japan is always near, with many Shinto shrines and public baths around the city. तो क्या पता चलता है from this text? Which things represent old Japan? Shinto shrines and public baths. These are things from old traditional Japan. So if you go 100, 200 years back in history or more, then what will you see very commonly in Japan? Shinto shrines and public baths. Traditional Japan. Traditional Japan is always near, with many Shinto shrines and public baths around the city. So there are still many public baths and Shinto shrines in Tokyo. And these things show the traditional face of Tokyo. And if you want to see the modern face of Tokyo, then you see the buildings, the modern buildings. Got it? Okay. Let's move on to next. Visiting Tokyo. Tokyo is on the east coast of Japan. Japan is a country in the water. It's an island type country, right? So it is on the east coast. It is on the east. East is the right side. It is on the east coast. Tokyo is on the east coast of Japan. Mumbai is not on the east coast. Mumbai is on the west coast of India, right? But Tokyo is on the east coast of Japan. The summers are hot and humid. The summers in Japan are hot and humid. Sticky, sticky, chip, 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 chip. Summer season in Japan. Any city that is on the coast has a humid summer. Mumbai also has a humid summer. Okay. The most beautiful time of year is spring. The most beautiful time. Superlative adjective? The most beautiful time of year. साल का सबसे सुंदर समय. The most beautiful time of year is spring. And in India, in Bihar, the most beautiful time of year is? What's your opinion? Weather-wise. मौसम के हिसाब से. Most beautiful time of year? Culture-wise depend करेगा. Right? कोई कहेगा दशहरा का टाइम, कोई कहेगा ये ईद का टाइम, right? Culture wise समझते हैं वो अलग अलग चेंज, लेकिन मौसम wise I think we all have the same opinion mostly. Tell me, what is the best time, the most beautiful time of year? Yeah, February, March, right? Some people who love winter, they will say December, January as well, maybe, right? Yeah, for Europeans, if Europeans want to visit India, the best time, the most beautiful time would be December and January. Yeah, the trains might be a little slow, okay, but otherwise it is the best time for them to visit. And February is just perfect for almost everyone. Not hot, not cold, nothing. Just perfect. 15 degrees, 15 to 25 degrees temperature. At night, it is about 15, 16. And during the daytime, it is 25, 26. Recently, things have changed though. Last February reached 40 degrees. Nearly. It was in mid-30s.
Summers are hot and humid. The most beautiful time of year is spring, when the famous cherry blossom is on the trees. The famous cherry blossom is on the trees. Cherry के फूल लग जाते हैं पेड़ों पे. When the famous cherry blossom is on the trees, and it's famous. Okay, they look beautiful. Red cherry blossom. Okay. The city is huge, very big, huge, very big. The city, which city? So the city, समझ में आया क्यों the city लिखा है? पता है हम लोगों को. Definite city की बात हो रही है. The city is huge. यहाँ शहर की बात नहीं हो रही, टोक्यो की बात हो रही है. ऐसा नहीं कोई भी शहर, द सिटी, ऐसा नहीं. टोक्यो इज ह्यूज. टोक्यो की जगह द सिटी इज ह्यूज, बट इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड. इट इज ह्यूज एंड येट इट इज नॉट डेंजरस. Normally huge places are dangerous, difficult to govern. Now, not like Delhi, like UP. UP is a huge in our state, very big state. And it is very difficult to govern. Crime rate is very high in UP. Tell me, if the class is small, it's easier for the teacher to control it? Yeah. And if the class is big, very big, then it's more difficult? Yeah. Clearly, big cities are difficult to govern. Crime rates are high in big cities. Okay. The city is huge, but it is one of the safest cities in the world. It is one of the safest cities in the world, despite its size. Size ज़्यादा है, okay? Yet it is very safe. It is one of the safest cities in the world. Japan is mysterious. Part of a speech बताओ mysterious का. हताक से पता चल जाता है. जापान को डिस्क्राइब किया. डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है. इसको यूज करेंगे डिस्क्राइब करने के लिए. Vinay sir is mysterious. Not really. Okay. Mysterious means something or someone you don't understand very easily. Confuse you. Her mysterious smile. It means people understood why she was smiling. If you understand the purpose of the smile is not mysterious. But a mysterious smile confuses you. Why is the person smiling? What's going on in his mind or her mind? Okay. A mysterious character. A mysterious person. People don't know much about. Rekha is a very mysterious character, person. Rekha from our film industry. In the old actress. She doesn't do many interviews. People don't know much about her life. She's a mysterious person. Okay. Do you think mysterious people are more interesting? Okay. Japan is mysterious. It is difficult for foreigners to understand. Mysterious means it's difficult to understand. Okay. Mystery is the noun. Mystery. Murder mystery. You heard about Arushi case in Delhi. A 14, 15-year-old girl was killed inside her house. Nobody knew how she was killed. The house was locked from inside, and still the girl was killed in her own room. And inside the house, it was her parents and a servant. Later, the servant's body was also found on the roof. Who killed the servant? Who killed the girl? There were only two people inside, the father and the mother. Were they the killers? Well, we don't know. Nobody knows. The case was so mysterious, it never got solved. There is a movie on this, Talwar, because it was the Talwar family. Arushi Talwar. What a waste of life, यार. दो लोग जान चले गए. क्या मिला किसी? कौन सा गुस्सा आया होगा किसी को उसमें? Lives must be protected. जो पैदा हो गया है ना, उसको बचाना सबका फर्ज है मेरे ख्याल से, ताकि जैसे हम लोग जी करके क्या महसूस करते हैं, हम लोग जिंदा हैं, वी आर ऑल लिविंग, क्या महसूस करते हैं कि हम कल नहीं मरना चाहते, आज रात हमको कोई ना मारे हम चाहते हैं ऐसा, तो कोई किसी को क्यों मरना चाहिए?
lives must be protected. Human lives must be protected. I mean, some people will say all lives should be protected, but I know it's a bit extreme, difficult, radical, but human lives must be protected. मेरे को बहुत बुरा लगता है सुन के, लेकिन कुछ लोग का दिमाग इतना खराब होता है, वो ना मरने से डरते हैं ना मरने से, उनका दिमाग ही खराब है। उनके उनको लगता नहीं कि जीवन का क्या अहमियत है, वैल्यू है। दे डोंट अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ लाइफ। कोई कहता है कि मेरी बेटी फलाने जात में शादी कर ली, मार दो बेटी को, मार दो उस लड़के को भी। यार, somebody will say मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे चीट किया, मार दो उस लड़की को, फिर हम भी मर जाएंगे, लाइफ इज बेकार। I think there should be a period at school where they should teach the value of life, most important. हर आदमी जीवन को सबसे ज्यादा वैल्यू करना शुरू करे। Life should have more value than everything else. फिर बात आएगी भगत सिंह। He sacrificed his life in a way. He could have run away after, doing what he did, but he decided to surrender in a way, get arrested, and he used the court proceedings to, make people aware. He knew the court proceedings will go in the newspapers and people will read about it. And he thought it would be a good opportunity for him to address the whole nation. It's very difficult from two different perspectives. एक तरफ से लगता है देश के लिए जान देना is a noble cause, फिर एक तरफ से लगता है जान क्यों देना, why people should die. जो पैदा हो गया उसको जीना चाहिए जब तक उसकी खुद मौत ना आए. Why should a person be killed for anything? बट अगेन ये जो मैं बोलता हूँ ये काफी अभी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, बहुत मुट्ठी भर लोगों की बात समझ में आती है कि जीवन बचाया जाना चाहिए। इंसान बहुत फालतू चीजों के लिए मर रहा है, फालतू चीजों के नाम पे मरता है और मारता है, और कुछ लोगों का फायदा है तो फालतू चीज को फालतू नहीं, उसको ग्लोरीफाई कर देते हैं कि नहीं ये तो बहुत बड़ी बात है। एक लड़के ने अपनी बहन को मार दिया क्योंकि उसकी बहन बदचलन थी, कोट एंड कोट बदचलन, इन्वर्टेड कॉमा में बदचलन, क्योंकि बदचलन वर्ड को मैं सब्सक्राइब नहीं कर रहा हूं इसलिए मैंने उसको इन्वर्टेड कॉमा में बोला कि मैं ही बोल रहा बदचलन, लोग कहते हैं बदचलन इसलिए मार दिया। कई लोग उस लड़के को सपोर्ट करते, ठीक किया, मार दिया अपनी बहन को, बदचलन थी। और सारे भाई को तुमसे लेसन लेना चाहिए, आजकल के हरामी भाई हैं ऐसे वैसे करके वो ग्लोरीफाई करते उस आदमी को जिसने अपनी बहन को मार दिया बदचलन होने के इल्जाम पे। तो क्या सोचे, वो क्या कर रहे हैं, वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं ताकि ये ट्रेंड बना रहे, सब मिलके एक साथ खराब बोलने लग जाए उस आदमी को, तो फिर दूसरा जो सोच रहा है अपनी बहन को मारने का वो नर्वस हो जाएगा कि अरे कोई नहीं सपोर्ट कर रहा। सो वी ऑलवेज हैव पीपल विद वेस्टेड इंटरेस्ट जो गलत चीज को सपोर्ट करके उसको ग्लोरीफाई करवाएंगे, नहीं सही है तो बहुत नोबल चीज है। देखो तो इसने मार दिया अपनी बहन को क्योंकि उसने बदचलन व्यवहार किया था। ओह, anyways, come back. Japan is mysterious. It's difficult for foreigners to understand. My personal, हर एक आदमी का अपना पर्सनल वैल्यू होता है ना, अपना खुद का क्या सही क्या गलत। तो पर्सनली आई थिंक ना लाइफ शुड नॉट बी लॉस्ट। जो पैदा हुआ है उसको किसी भी चीज के नाम पे मरना नहीं चाहिए। वो सारी चीजें जो इंसान को मरने के लिए प्रेरित करती हैं, इंस्पायर करती हैं, उन सब चीजों को धीरे धीरे डिग्लोरीफाई करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, उसको हटाना चाहिए। देशभक्ति, अच्छा ठीक है, ओके फाइन। इंडिया इज सराउंडेड बाय चाइना, पाकिस्तान एंड नाउ एक नया कंट्री आप बोल सकते हो बांग्लादेश। ओके, दे वांट टू डिस्ट्रॉय यू, चलो ठीक है, ओके फाइन। स्विट्जरलैंड is a country, Greenland is a country, Iceland is a country। यहाँ के लोग ये जो फीलिंग है ना देशभक्ति वाला, वो नहीं ऐसा है मरना है देश के लिए, ऐसा नहीं सोचते। फॉर देम लाइफ हैज वैल्यू। क्यों?
क्योंकि उनके आसपास ऐसे लोग नहीं, यहाँ पर हैं, इसलिए हम लोग को बना दिया गया है, बता दिया गया कि देश के लिए मरना इज अ प्राउड थिंग, इज अ ग्रेट ग्रेट थिंग। और इस वजह से हम लोग वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह ये करने में लगे हैं। अभी इसका कुछ लोग मुझसे कह देंगे कि भाई बताओ तो क्या करना चाहिए, सोल्यूशन क्या है, नहीं मरेंगे हम लोग, चलो बताओ क्या करना चाहिए। ठीक है, ऑफ कोर्स इट्स डिफिकल्ट, आई नो। जहां पर लोग कहते हैं ना, एक रशिया ने एटम बम चला दिया होता भी, तो ये दम दम इधर उधर चारों तरफ से चलना शुरू हो जाता दोस्तों। बड़ी बातें बदल बदल जाती हैं, इंसान के साथ ऐसा है। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बट डू यू थिंक लाइफ शुड नॉट बी लॉस्ट? लाइफ इज वैल्यूएबल। क्या आप मानते हो लाइफ शुड नॉट बी लॉस्ट? किन किन चीजों पे लाइफ को लूज कर देना चाहिए? विच आइडियाज आर वर्थ sacrificing your life for, in your opinion? किन चीजों के लिए जिंदगी बर्बाद कर देनी चाहिए, मतलब मर जाना चाहिए या मार देना चाहिए? किन चीजों की? What things come to your mind for which we should be ready to sacrifice our life? एक तो बोलेगा इंसान, सबसे पहले बोलेगा कंट्री, फैमिली आएगा पहले, मे बी we should sacrifice our life to protect our family. Well, I kind of agree. If there is risk to your family, जिसको आप प्यार करते हो, तो उसको बचाने में अगर आपकी जान चली गई, उसको बचाने में, ओके, देन इट्स फेयर, आई विल से। ठीक है, ये नहीं कि आप बेमतलब में, बचाने में उनको। योर चाइल्ड इज इन द रिवर और उसको बचाने आप चले गए, आप डूब गए, तो दैट्स, आई अंडरस्टैंड कि आप गिल्ट लेके जीते कि वो डूब रहा था और आप कुछ नहीं कर रहे थे, तो यू ट्राइड एंड इन दैट प्रोसेस यू लॉस्ट योर लाइफ। आई अंडरस्टैंड दैट। तो फैमिली, टू प्रोटेक्ट योर फैमिली, मेक सेंस। It's a very practical reason. Anything else that you think, life should be sacrificed for? Country, कुछ लोग कहेंगे कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर कोई एनिमी कंट्री आप पे अटैक कर दे, तो बचाने के लिए अपने कंट्री को आपको अपना जान निछावर करना चाहिए, शुड सैक्रिफाइस योर लाइफ। ठीक है, अग्रीड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। लेकिन क्रिएट अ सिचुएशन जहां नो कंट्री अट्रैक्ट्स यू, यू हैव गुड रिलेशन विद ऑल द कंट्रीज, ये ज्यादा बेहतर होगा, so that they don't attack you. लेकिन फिर भी Russia and Ukraine were brothers. Like India and Pakistan, at least we are divided by religion to a certain extent, by ideology. Pakistan believes in a strange kind of ideology. Okay. But Russia and Ukraine, what's the difference between them? The same eyes, the same skin, the same language. Russian, they speak Russian. Ukrainian have their own Ukrainian language, but they also speak Russian, and Ukrainian and Russian are not very different languages. But who are not? Ukraine is also rubble these days. You see the photos of Gaza only, but if you check out, then Ukraine is also very much the same. Not all of it, but a lot of parts. कभी कभी सोचना चाहिए इंसान को, अपने वैल्यू सिस्टम को इवेल्युएट करना चाहिए कि मेरा जो है, क्या चीज के लिए हम स्टैंड लेते हैं, ये कौन सी चीज मेरे लिए मायने रखती है। A raped B's sister, B should go and rape A's sister. Huh? A killed B's family member, B should go and kill A's family member. What do you think? ये आपके पर्सनल वैल्यू सिस्टम में मैच करता है? ये सवाल ये है, आप पर्सनली इसको सही मानते हैं? A has killed B's family member, तो B should kill A's family member. गुस्सा में आता है ना फीलिंग, ऐसा ही फीलिंग आता है ना, मेरे भाई को मारा, उसके भाई को पकड़ लिया, मारो। बट शांत दिमाग में, आई मीन गुस्से में तो हम सब गलतियां करते हैं ना, शांत दिमाग में, डू यू अग्री विद दिस? दैट्स व्हाट मैटर्स। गुस्से में तो मैं जितना अच्छा अच्छा बोल रहा हूं उल्टा कर दूंगा, बट आई विल नॉट कंडोन इट। कंडोन मतलब माफ करना कि नहीं सही था। आई विल नॉट कंडोन दैट बिहेवियर। से गलती हुई, गुस्से में गलती हुई, मैंने आपके घर वाले को गाली दे दी गुस्से में, ओके, आई विल नॉट से इट वाज ओके,
नाउ आई मेड अ मिस्टेक. गलती करना इज वन थिंग, बट उसको सही बोलना इज डिफरेंट. गलती करना इज इजी बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमंस. वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल आर. मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहा हूँ ना, हो गया मेरे से, मेरे मूड खराब कर दिया किसी ने, मेरा पूरा उल्टा बिहेवियर दे दिया. व्हाई? आई लॉस्ट माई कंट्रोल एंड आई बिहेव बैडली. तो वो कंडोनेबल नहीं है कि हाँ नहीं ये माफ कर दो, नहीं हो गया, नहीं, वो गलत है. इट वॉज नॉट सपोज टू हैपन. ये राइट सही है जो मैं शांत दिमाग में बोलता हूं. वो मैंने जो गलत गुस्से में बोला वो गलत है. वो मेरा कंट्रोल नहीं हुआ तो मैंने ऐसा बोल दिया, मैंने ऐसा कर दिया, दैट्स गलत. इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड acceptable and right, even if I did it. No, I should not ask people to condone that. Golden rule, do what you expect others to do to you. वही करिए जो आप चाहते हैं कि सामने वाला आपके साथ करे. आप सामने वाले को गाल पे जोर से तमाचा मारिए बेमतलब में, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको बेमतलब में तमाचा मारे और आप कन्विंस्ड हो कि ये सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है. Golden rule. Okay, come back to Mumbai, a city of extremes. Sometimes I think that jungle is the areas where animals live. Sometimes I think the whole world is a jungle. Ever since Ukraine-Russia war started, I have felt that the whole world is a jungle. My opinions have been challenged so much because of this war. भाई हैं वो लोग. So many people have already lost their lives from both sides. Madness. They are really brothers. There is no difference between them, Ukrainians and Russians. Appearance wise, culture wise, food habits, language, clothing, no difference. यूपी और बिहार में क्या ही डिफरेंस है भाई? आज ना बॉर्डर बना रखा है तुमने. कल्चर इज द सेम, लैंग्वेज इज द सेम, everything is the same. That is how it is between Russia and Ukraine. So their war has challenged my opinion a lot. I'm very unhappy inside, not knowing what to say, what to do, because मैं पहले convinced होता था अपने ideologies के बारे में, but right now I feel very confused about what I think because of what has happened. Earlier I used to think there is possible, that human beings will live in peace with each other. But Russia-Ukraine war has made me feel so confused. Anyways, coming back to this. A city of extremes. बताओ बेटा, extremes का part of a speech बताओ. A city of extremes. बड़ा ही चैलेंज, ये आसान है और मुश्किल भी. मीनिंग पे मत जाओ. जब भी कोई वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच बताना हो तो मीनिंग पे मत जाना. मीनिंग पे कभी मत जाना, ओके? क्योंकि मीनिंग तो तुम अस्यूम करते हो, तुम जानते थोड़ी हो. तुम अस्यूम करते मतलब अंदाजा लगाते हुए मीनिंग होता है, ठीक? उससे कभी पार्ट ऑफ स्पीच मत बताना. पार्ट ऑफ स्पीच बताना अरेंजमेंट देख के. ए सिटी ऑफ एक्सट्रीम्स. बताओ क्या लगता है तुम्हें? इट इज अ नाउन. ऑफ के बाद और क्या आ सकता है? ऑफ इज अ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? या अब बताओ, नाउन मतलब चीज है, या लोग, या तो जगह. पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स. तो आप मुझे बताइए एक्सट्रीम क्या है? पीपल है, प्लेस है, या थिंग है? थिंग है. अब ये बताइए कैसा थिंग है? कॉन्क्रीट थिंग है जिसको पकड़ सकते, छू सकते, या एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, यानी आइडिया है? हाँ, तो बताओ, एक्सट्रीम मतलब होता है अति. किसी भी चीज का उस लेवल पर पहुंच जाना जहां पर वो एकदम अजीब हो जाए, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम. नाउन के तौर पे एक्सट्रीम एक एडजेक्टिव भी है बेटा. एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम पॉवर्टी.
एक्सट्रीम पॉवर्टी, पॉवर्टी गरीबी, बहुत जबरदस्त गरीबी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आपने एक्सट्रीमली सॉरी सुना? एल वाई हटाओ, एडजेक्टिव, ठीक है, एक्सट्रीमली एडवर्ब पढ़ा है ना, एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब, तो एक्सट्रीमली एडवर्ब, एल वाई हटाओ, एडजेक्टिव एक्सट्रीम। तो ये नाउन है एक्सट्रीम, और ये ऐसा वर्ड है जिसको आपको समझना होगा। Too much of something is called extreme. Too much of something is called extreme. A city of too much. A city of मतलब जो भी चीज वहां टू मच है, अमीर भी है तो अमीरी भी है, तो अमीरी भी है तो टू मच अमीरी है, और गरीबी है तो टू मच गरीबी है। A city of extremes. I don't like men who believe in extremes, and behave in extreme ways. कुछ लोग होते ना, गुस्सा दिखाएंगे, तुम बहुत ज्यादा प्यार दिखाएंगे, बहुत ज्यादा, अरे यार करो सादा निभे बाप दादा, देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस। मैं गुस्सा होता हूं, ठीक है, लेकिन गुस्सा होने मां बहन करने लगेंगे, सोचने वाली बात है। फिर उसको मुंह दिखाना है कि नहीं दोबारा? गुस्सा उससे अभी हुए हैं, पहले प्यार था, अच्छा था, तो फिर दोबारा मिलना है ना, तो इसका मतलब I don't like people who behave in extremes. Okay. People with extreme behavior. अब यहां पर extreme adjective है बेटा, क्योंकि behavior noun है। कैसा behavior? Extreme behavior, मतलब वही वाला, एकदम जिधर भी जाए एकदम पूरा चले जाए, इस छोड़ जाए तो इधर पूरा, इधर जाए तो इधर पूरा, अरे stay in the middle somewhere, balanced, right? Sensible. Mumbai is a city of extremes. Mumbai is India's largest city. India's largest city. जब इंडियाज बोलते हैं तो द नहीं बेटा, Mumbai is India's largest city with a population of 22.8 million. Mumbai is India's largest city with a population of 28.8 million. It means Mumbai has a population of 22.8. जरा सा पीछे देखना बेटा, previous text, Tokyo has a population लिखा है, ए छोड़ना नहीं बेटा, यही प्रॉब्लम है। चाहे स्पोकन इंग्लिश क्लास हो या ग्रामर, तुम्हारा फोकस तुम्हें परफेक्ट बनाएगा। तुम अगर वो पॉपुलेशन बोलते हो लेकिन ए छोड़ के, तो तुमने उसको गौर नहीं किया, हाँ कि ना? अब वो कोई भी क्लास रहे तुम अधूरा ही करोगे, क्योंकि तुम फोकस कम करते हो। वहां क्या पढ़ा था बेटा? टोक्यो हैज ए पॉपुलेशन। अब आगे पढ़ो बेटा, मुंबई हैज ए पॉपुलेशन ऑफ 22.8 मिलियन। अगर हम सीधा सीधा बोलना चाहे तो मुंबई हैज ए, and it is India's largest city, and it is, तोड़ दिया ना मैंने, चिपकाना नहीं, हमें पढ़ के आएंगे, लेकिन अपने जब बात करेंगे तो अपने तरीके से बोलेंगे। मुंबई is India's largest city. It has a population of 22.8 million. I'm pretty sure the numbers have changed. It's a very old book. Okay. It is also India's most important commercial center. Commercial means related to business. In Hindi we say वाणिज्यिक। सुना है ये वर्ड कभी? वाणिज्यिक। मुझे पता है 90% नहीं सुने होंगे। आप उस जनरेशन के हो जिसको ना अच्छी हिंदी मिली ना अच्छी इंग्लिश मिली, जिंदगी तुम्हारी झंड बना दी, ठीक है? ना अच्छी हिंदी मिली ना अच्छी इंग्लिश मिली, तुम लोग अनफॉर्चुनेट हो। हालांकि यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट इट, चेंज इट। कैसे चेंज करोगे? Expose yourself to quality language, Hindi, quality language of Hindi and English, both. धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। मैं हिंदी बहुत अच्छा जानता हमेशा से, बिकॉज आई वॉज हिंदी मीडियम स्टूडेंट, इसलिए मैंने बोला वाणिज्यिक। हालांकि बहुत अच्छा मतलब नहीं कि मतलब आई कैन गेट अ प्रोफेसर्स जॉब और समथिंग, बट बिकॉज हिंदी इज माई मदर टंग, आई नो हिंदी वेरी वेल। I can decide what is right, what is wrong on many occasions more confidently than many other people in my town about Hindi. And my vocabulary in Hindi is also pretty great.
कंपेयर टू अदर पीपल अराउंड मी। जैसे अभी मैंने फट से बोला क्या, वाणिज्यिक। एक और वर्ड बोलता हूं, सार्वभौमिक। सुना है? कौन सुना है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ बोलो, क्या होता है इसका मतलब? ऐसे तो कोई बोलते हम सुने हैं, झूठ का क्या वैल्यू। अच्छा तू बता, कहाँ सुना है, कैसा सेंटेंस में सुना है? कोई सेंटेंस बोल दे, मतलब छोड़ दे, जहां सुना था वो सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट दे दे, कहाँ सुना? मैं बोलूं, सार्वभौमिक सत्य। सुना है कभी? नहीं सुना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, दो वजह हो सकती है। हालांकि मैं 19-20 साल में भी जानता था ये वर्ड्स, ऐसा नहीं कि मैंने अभी सीखा, सॉरी आई वोंट लाई, मैं जानता था ये। My Hindi has always been better and better than this generation, current generation. Okay, definitely better. आप लोग, you have the worst of both the worlds, the worst. ना आपकी हिंदी आई, ना आपकी इंग्लिश आई। सार्वभौमिक सत्य नहीं पता आपको, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। पराकाष्ठा, बोलो, जल्दी बोलो। सुना है? इच्छा। पराकाष्ठा मतलब इच्छा होता है? नहीं, कोई सुना भी नहीं है ना, सुना भी नहीं है ना, सबसे बड़ी बात है सुना भी नहीं है। पराकाष्ठा मतलब होता है जो सबसे ऊंचाई वाला स्टेज है, उसको कहते हैं चरम। पराकाष्ठा मतलब चरम। चरम तो पता था। ये वर्ड सुना होगा, अलौकिक। मतलब लौकिक का छोटा बच्चा, तो अलौकिक मतलब सुना तो है लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, जो इस दुनिया से नहीं है, जो इस दुनिया से अलौकिक। लोक से लेना देना नहीं है ना, अलौकिक, लोक से बाहर। लोक मतलब दुनिया। ओके। त्रिलोचन। तो भाई ऐसा नहीं, सरेंडर मत करो कि तुम्हारी अच्छी हिंदी नहीं, अच्छी इंग्लिश नहीं है, ठीक है? तुम चाहो तो उसको कर सकते हो। यू हैव टू स्पेंड टाइम विद द राइट काइंड ऑफ लैंग्वेज। मैं फिर बताऊं, यस्टरडे आई वाज लिसनिंग टू सम गजल। तो मेरी वाइफ पे उतना असर नहीं होता गजल का, क्योंकि वो भाषा में मेरे जैसी नहीं है वो, ठीक है? क्या था? मुद्दत बाद मिले हो, ए गजल है। मुद्दत बाद मिले हो। हम्म। क्यों इतने चुप खामोश रहते हो। हाँ, मुद्दत बाद मिले हो, क्यों इतने खामोश रहते हो, ऐसे ही गुमसुम रहते हो, गुमसुम रहते हो, खामोश नहीं, गुमसुम रहते हो। हम्म। तेज हवा ने मुझसे पूछा, तेज हवा ने, रेत पे क्या लिखते रहते हो। क्या असर हुआ तुम पे? मेरी आंख में आंसू आ गया, एक बूंद हल्का सा यहाँ पे। ये जो आइडिया है ना, जिस तरीके से गजल में, I said, wow, this was my reaction, and a small drop of water in my. तो ये लैंग्वेज का असर मेरे पे होता है। मैं म्यूजिक की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड्स। तेज हवा ने मुझसे पूछा, रेत पे क्या लिखते रहते हो। वाह, क्या फीलिंग आई उस समय। अभी इस लड़के को मैंने देखा, इसका रिएक्शन, इसको फील हुआ। शब्दों का ये भी रसिया है, शब्दों का रसिया, मतलब कि आशिक या लवर। ओके। तो कुछ लोग ना शब्दों के रसिया होते हैं, उनको ना शब्दों से प्यार होता है, उनका अलग रिश्ता बनता है शब्दों से, और वो शब्दों से बहुत मूव होते हैं। आप उनको बहुत बुरा फील करा सकते हैं शब्दों से, आप उनको बहुत अच्छा फील करा सकते हैं। बताओ ना, क्या जरूरत है कि वो एक बूंद आंसू क्यों आएगा ये लाइन सुन के, और इतनी तेजी से। मतलब सुना है मैंने अभी, जैसे सुनने में कितना ही देर लगेगा ये लाइन, उतनी देर में मेरा बॉडी रिएक्ट कर गया इस पे, मेरा दिमाग इतना रिएक्ट किया कि एक बूंद आंसू आ गया है। तो मैं बस यही कहूंगा कि
आई एम वेरी लकी फॉर सर्टेन थिंग्स दैट गो फॉर मी। मेरे साथ बहुत अच्छी कुछ चीजें होती हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है अपने बारे में। लाइक आई एम ए रसिया ऑफ वर्ड्स मुझे अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं पढ़ाने को ज्यादा इंजॉय कर पाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाने को, लैंग्वेज पढ़ाने को, टीचिंग वोकैबुलरी एंड ऑल। तो डू योर बेस्ट, इंजॉय करें आप भी, गजल सुने अपने शब्दों की जानकारी बेहतर करें। ओके हाँ, बाय द वे, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, ये 3 लैंग्वेजेस अगर आप अच्छे से जानते हैं ना तो आपके जीवन का स्तर ही बेहतर हो जाएगा। आई विल सी यू गाइस।